Hello everyone, good morning. How are you all? Hope you are doing well. Okay, so this will be lecture 3 on geography optional, which is basically we will see that this is major important part of the temperature. Okay, what is temperature? Temperature क्या होगा? आपने NCERT में GS में थोड़ा बहुत इसे पढ़ा होगा, अंडरस्टैंड करा होगा. What is temperature? Okay, what is temperature? Okay, this class is also going live on Facebook and YouTube. Okay, you can comment there. आपके जो भी queries है आप उसको comment करेंगे. Those will be addressed in the live class. अगर live class के बाद आप देख रहे हो तो आप comment section में जाके comment कर सकते हैं. These queries, your queries will be addressed properly. Okay, so what is temperature? Temperature क्या होगा? Okay, just give me 1 minute. I also want to see the comments on Facebook. Okay, so अभी नहीं है. It's hazy. What is a temperature? ये बहुत सिंपल सी एक चीज है. Temperature here will be seeing that it is basically the measure of heat in a certain region. Okay, over atmosphere. For example, ईटानगर का अभी अगर हम टेम्परेचर देखेंगे, like if we go to the weather app, so वहाँ पे बताएगा like 22 to 23 डिग्री सेल्सियस in the like अभी exact point पे. So what is this temperature? This temperature is a measure of heat in that particular region over the atmosphere. Atmosphere में वो temperature अभी present है. Okay, so this is seen as a part of temperature. Temperature ये रहेगा. अब temperature का हम देखेंगे कि इसका climate से क्या relation है. कि climate से इसका क्या relation रहेगा. तो temperature if we look at, it is different in different regions. Okay, जैसे कि अगर हम दिल्ली में देखेंगे अभी temperature will be around 40 डिग्री प्लस हो गया है. अगर हम डेजर्ट रीजन में देखेंगे लाइक इन राजस्थान, तो इट विल बी लाइक 45 डिग्री प्लस वो जा चुका होगा. So in this way we see that कि over the different regions of earth we have different temperature. अगर हम एक और चीज यहाँ पे फेस अगर हम देखते हैं लाइक ओवर द इक्वेटर रीजन एक एवरेज टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस. अगर वही हम ट्रॉपिकल रीजन में जाएंगे तो वी विल सी दैट इट इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, ओवर द ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बिकॉज यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा है. हाई प्रेशर जोन्स के प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है. सो देर इज डायरेक्ट इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय द सर्फेस ऑफ अर्थ विच एक्चुअली हीट्स द एटमॉस्फेयर. देन अगर हम टेम्परेट रीजन में देखेंगे सो दिस विल बी अराउंड 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा एंड पोल्स में 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. सो दिस इज अ टेम्परेचर वेरिएशन विच इज टेकिंग प्लेस ओवर द अर्थ. ये जो मैं वेरिएशन देख रहा हूं दिस इज लैटिट्यूडनल. ओके, एक टेम्परेचर वेरिएशन हम और देखते हैं. टेम्परेचर वेरिएशन किस तरीके का होगा लाइक इफ वी आर ओवर द माउंटेन रीजन. सो माउंटेन रीजन में बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल लैप्स रेट. ओके, कल हमने थोड़ा सा एनवायरमेंटल लैप्स रेट के बारे में देखा था कि हाउ विद द increase in height the temperature decreases. Okay, इसे हम और अच्छे से देखेंगे under the inversion of temperature कि actually environmental lapse rate work कैसे करता है. So in this case we will see that कि as we move up for 1000 meters, for example this is like 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. तो 1000 meters अगर ये है तो यहाँ पे टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस उससे कम होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी 28.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा. देन दिस इज 2000 meters. So 2000 meters में we will say that this will be almost around
22 degrees Celsius. So over the surface of Earth, the temperature is 35 degrees Celsius, which is near to the mean sea level. And towards the higher altitudes, temperature करीब 12-13 डिग्री वहां से कम रहता है, जहां पे हाइट रहती है ऑलमोस्ट अराउंड 2000 मीटर्स के आसपास में. देयरफॉर हम कुछ फेनोमेनास देखते हैं, लाइक अगर आप केरला वाले रीजन जाओगे, तो केरला में कोस्टल एरिया में टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई. बट एज यू क्रॉस दिस पर्टिकुलर हिली एरिया, आप हिली एरिया के ऊपर साइड में जाओगे, तो यहाँ पे इट इज क्वाइट कूल, आपको बहुत कूल फील होगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब दिस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अस कि एक टेम्परेचर किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जैसे अर्थ के सरफेस में कितना इंसोलेशन आया, किस तरीके से आया, कितना हमने यूज किया या कितना प्लांट्स ने यूज किया, एनिमल्स ने यूज किया, एंड हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस ऑफ अर्थ. ये हम अंडरस्टैंड करते हैं इस केस में. प्लस देयर आर सर्टेन रीजन्स ऑफ अर्थ लाइक कि 40 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड तक के वी हैव सरप्लस हीट. इस वाले रीजन में विल बी हैविंग अ सरप्लस हीट सिस्टम हियर. लेकिन जो 40 डिग्रीज लैटिट्यूड हम क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद में द रीजन बिकम्स हीट डेफिसिट. So this is also another parameter where we see that the temperature is also declining here as we go from, that is the heat is actually declining here as we go from equator towards the poles. Now ये condition को अगर हमें understand करना है और अच्छे से, कि temperature को मुझे understand करना है, so temperature अगर मुझे देखना है कि how it is changing or how it is varying, we need to see here two parts. Number one, that is the primary factor, and number two, that is the secondary factor. This is factors affecting distribution of temperature. This is factors affecting distribution of temperature. Under these factors, what we will see here that under these factors, number A, that is the primary factor. Primary factor के अंदर में the most important part here, that is the latitude. Okay, latitude is the most important part here. For example, how this latitude helps in determining the amount of insolation which is received by the surface of Earth. For example, this is the Earth ka side which is facing the sun. Okay, it is facing sun here. So we know one thing that कि sun जिस point पे it will be almost tangent या perpendicular रहेगा, वहाँ पे अगर हम surface को देखें, तो the surface will be almost straight here. So maximum amount of insolation it will be covered here over the small area. Maximum amount of insolation here it will be covered in the small area. So therefore जो ज़्यादा heat होती है वो कम area में distribute होती है. Okay, ज़्यादा heat कम area में distribute होने के कारण वहाँ पे जो temperature होगा, वहाँ जो heat होगा, heat will increase, heat accumulation will increase. This heat accumulation increase will result in the temperature rise. But जैसे जैसे हम देखेंगे कि we are moving towards the higher latitudes. Higher latitudes में हम एक phenomena देखेंगे where the obliquity of the surface of earth is being seen here. Okay, obliquity में क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा था वही जो इंसोलेशन आ रहा था, दिस इंसोलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्जर एरिया. वी कैन सी कि यहाँ पे स्मॉल एरिया में सेम हीट आ रही है, यहाँ पे लार्जर एरिया में सेम हीट आ रही है. इनफैक्ट एज वी मूव टुवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड वी विल सी दैट कि यहाँ पे कम हीट आ रही है ओवर द सेम सरफेस एरिया. एंड और हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे, सो लैटिट्यूड में जाएंगे, हियर विल बी सीइंग दैट कि और यहाँ पे हीट जो आ रही है दिस विल डिक्रीज एंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल बी टुवर्ड्स द वास्टर सरफेस एरिया. देन पोलर रीजन्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट पहुंचती है. ओके, वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इज रीचिंग इन द पोलर एरियाज. सो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन व्हाट वी सी दैट कि लैटिट्यूडनली टेम्परेचर वेरीज ओवर डिफरेंट लैटिट्यूड्स. ओके, डिफरेंट लैटिट्यूड पार्ट में टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करने लगता है. So this is the part where we see that कि this is the primary factor. This is the primary factor जिसके कारण हम देखेंगे कि over the earth we have different temperature at different regions. Like equator में temperature ज़्यादा होगा,
टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल रीजन हम देखेंगे कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्यों होगा इसे हम और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे इन दिस क्लास ओनली। ओके, जैसे हम जाते हैं टुवर्ड्स द टेम्परेट रीजन तो यहाँ पे स्लैंटिंग एकदम से इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन हियर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्मॉल एरियाज। ओके, जस्ट एक पार्ट देखेंगे। Okay, thank you very much, Itanagar Civil Services. Now, as we move forward, latitude में हमें कुछ पार्ट हमें अंडरस्टैंड करना है, okay, कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें वेरी करती है। सो फर्स्ट चीज देखेंगे हम, दैट इज द इंसोलेशन। द इंसोलेशन वर्ड जो मैं कह रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of light which is moving from the sun towards the earth and received by the earth over the surface area, this is called as insolation, that is the incoming solar radiation। लिख सकते हैं आप इसे, insolation is nothing but the incoming solar radiation। okay, यहाँ पे this will be varying from latitude to latitude। okay, नंबर 2 हम यहाँ पे देखेंगे, that is कि regions with 40 degrees of latitude north and south of the equator, that is 40 degrees of latitude of north and south of the equator में, this will be the heat surplus region। okay, so this will be 40 degree north to 40 degree south of equator, it is a हीट सरप्लस रीजन। ओके, यहाँ पे हीट का एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा होगा, हीट विल बी एक्यूमुलेटेड क्वाइट हाई इन दिस रीजन। नाउ उसके बाद में जब हम देखेंगे कि यहाँ से 40 डिग्री टू 90 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के बीच में, दिस इज हीट डेफिसिट रीजन। दिस इज मेजरली हीट डेफिसिट रीजन। यहाँ एग्जैक्टली होता क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि लाइक हमने 40 डिग्रीज लैटिट्यूड क्रॉस किया तो वहां पे एकदम से ठंडी लगना शुरू हो जाएगी, नहीं। हियर इन दिस केस वी विल सी दैट कि बिकॉज ऑफ सर्टेन फिनोमेना ऑफ अर्थ वी आर हैविंग एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द इक्वेटोरियल रीजन्स एंड द पोलर रीजन्स। इसके कारण क्या होता है, देयर इज अ बैलेंस ऑफ हीट इज क्रिएटेड विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट इज मेकिंग द अर्थ सरफेस मोर हैबिटेबल इन दिस पार्ट। ओके, नाउ इन दिस थिंग व्हाट वी सी दैट कि देयर आर, अब ये हो गया प्राइमरी पार्ट हमारा, प्राइमरी फैक्टर के बाद में नेक्स्ट फैक्टर वी हैव दैट इज द सेकेंडरी फैक्टर। सेकेंडरी फैक्टर में देखेंगे यहाँ पे कुछ डिफरेंट फैक्टर्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन सी एंड लैंड। ओके, सी एंड लैंड की जब हम बात कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ कॉन्टिनेंट दैट इज अफ्रीका। अब अफ्रीका के अदर साइड में वी हैव प्रेजेंस ऑफ सी, कंप्लीट सी प्रेजेंट है, ओशन है बेसिकली अटलांटिक ओशन, एंड इन दिस पार्ट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ओशन। ओके, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। इस केस में क्या होता है, लाइक जो पार्ट ऑफ लैंड रहेगा दिस विल हीट अप वेरी क्विकली एंड इट विल ऑल्सो कूल डाउन वेरी क्विकली, बट वाइल हम देखेंगे कि जो ओशन वाटर का पार्ट है दिस विल हीट अप स्लो, दिस विल हीट अप स्लोली, but it will also cool down slowly। okay, so this is one factor here। अब इसके कारण क्या होता है, what we see here that कि towards the part of like water वाले पार्ट में, यहाँ पे दिन के टाइम में लाइक मॉर्निंग का भी टाइम है, तो अगर आप कोस्टल एरियाज में जाओगे तो यू विल सी दैट कि जो सी वाटर है इट इज स्टिल कूल। तो कूल होने के कारण वॉट एवर द टेम्परेचर इन दैट पर्टिकुलर कोस्टल एरिया रहेगा, दिस विल बी क्वाइट लेस एज कंपेयर टू, this will be quite less as compared to the interior areas, this will be quite less as compared to the interior areas। okay, जैसे जैसे हम interior areas में पहुंचेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि the temperature here is the highest। okay, temperature उस region में highest रहेगा। this is one of the very important factor which influences the temperature of a particular region।
आप अगर देखेंगे कि कोस्टल एरिया से जैसे हम इंटीरियर पार्ट में एंटर कर रहे हैं, सो उस केस में टेम्परेचर विल स्टार्ट टू इंक्रीज, लाइक यहाँ पे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप जैसे मुंबई, कोची, गोवा जैसे रीजन में अगर जा रहे हो, तो आप देखोगे कि समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, वेरिएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। 27 टू 32 डिग्री सेल्सियस का एक ओवरऑल वेरिएशन रहता है। बट विंटर में भी हम उतना ही देखेंगे। बट जैसे आप इंटीरियर पार्ट में चले जाओगे टुवर्ड्स द सेंट्रल इंडिया, तो हियर यू विल सी दैट लाइक हैदराबाद है, लाइक नागपुर है, लाइक इंदौर है, लाइक रायपुर है, इन रीजन्स में आप देखोगे कि ठंडी के टाइम में टेम्परेचर ड्रॉप्स अप टू 15 डिग्री सेल्सियस या वी कैन से 12 टू 13 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप होता है। बट समर सीजन में वही देखेंगे कि टेम्परेचर क्रॉसेस 40 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, तो देयरफॉर यहाँ पे वेरिएशन इज हाईएस्ट, यहाँ पे वेरिएशन विल बी लोएस्ट हियर। This factor, that is difference between the sea and land, it is also called as the continentality factor. Okay, this is also called as continentality factor. Now, after this continentality factor, the second part here will be seeing that is the presence of ocean currents. Okay, same example मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, like we can take an example of North America here. Okay, North America and South America. In this North America and South America, अगर हम यहाँ के oceans को study करते हैं, तो we will see here that there is presence of warm ocean and cold ocean currents here. Like here we have California current. Okay, यहाँ पे एक और cold current है, which is called as Humboldt. Okay, in this region we have presence of warm Brazil current. Okay, here we have warm current as part of Alaska current. Here we have warm current as a part of Gulf Stream. Here we have presence of cold current as a part of Labrador current. Okay, so this blue one, it signifies that this is a cold current, while this orange or red one, it signifies that it is a warm current. तो किसी भी एरिया में अगर कोल्ड करंट प्रेजेंट है, सो उस रीजन में हम क्या देखेंगे कि जो टेम्परेचर रहेगा इट विल बी कंपैरेटिवली लो टू द लैंड, एंड जिन रीजन्स में वी हैव वार्म करंट, तो वहां का जो इंटीरियर पार्ट रहेगा दैट विल बी क्वाइट वार्मर, बिकॉज ये एक वार्मिंग इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा इन दिस पर्टिकुलर एरिया। While जो cold current है, they will bring certain coolness in those particular region. So this is also another important factor which influences the temperature of that particular region. Okay, यहाँ पे temperature उस तरीके से यहाँ पे vary करता है in regions में. Now, next factor अगर हम यहाँ देखें, that is the altitude. Okay, third factor here it is altitude. Altitude हमने अभी डिस्कस किया in the starting part कि for example we have a mountain region. Okay, mountain region. So यहाँ हम क्या देखते हैं कि there is a decline of temperature with average of 1000 meters. Okay, with the environmental lapse rate which is 6.5 degrees Celsius for 1000 meters. So every 1000 meters जो हम height cover करेंगे उसके लिए 6.5 डिग्री सेल्सियस का डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर होगा. दिस इज एन एवरेज पार्ट हियर. बट इफ आई विल लुक दिस इन द मैप, अगर मैं इसे मैप में अगर अप्लाई करना चाहूँ, तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि वी हैव सर्टेन माउंटेनियस रीजन्स लाइक रॉकीज. Okay, here we have Rockies. Okay, if we go to the South America region, here we have the presence of Andes. Okay, here we have presence of Andes. So in this Rockies and Andes हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे altitudinal variation होगा, for example this is my isotherm. Okay, isotherm होगा. So what will happen here? Okay, इस region में जैसे ही ये टेम्परेचर इस रीजन पे क्रॉस करेगा, एल्टीट्यूड यहाँ पे बढ़ेगा,
तो देयर विल बी डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्लाइन होगा। इस केस में आपको एक चीज याद रखना है कि वेन एवर देर इज अ डिक्लाइन इन टेम्परेचर, दिस इज अ इक्वेटर, दिस इज अ इक्वेटर। सो इस केस में जब भी डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर होगा, देयर विल बी सर्टन पार्ट कि इट विल मूव टुवर्ड्स द, यहाँ पे एक ड्रॉप होगा पोलर वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहा है। ओके, इन रीजन्स पे देखेंगे लाइक वी हैव 27 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी 22 डिग्री सेल्सियस, एंड नीचे में जाएंगे तो वी कैन हैव अ 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इन दिस वे व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जब भी टेम्परेचर डिक्लाइन होगा, उस केस में वो उस रीजन की तरफ मूव करेगा जहां पे टेम्परेचर कम है। सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है, सो दिस विल मूव टुवर्ड्स द पोलर एरियाज, जहां पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस है, एंड दिस वी कैन से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ, then this will move forward ahead like this. So this is also one of the instances जहाँ पे altitudinally we are saying that there is decline of temperature is taking place, which is part of the secondary factor here. Okay, now इसके साथ में हम क्या देखते हैं कि there is certain variation with respect to season. Okay, with respect to time हम कहेंगे इसमें this is temporal variation. Temporal variation, that is the season. ओके, अंडर द सीजन्स हम क्या देखते हैं, लाइक इफ वी मेक अगेन मैप ऑफ अफ्रीका। ओके, सो इन दिस केस व्हाट वी आर सीइंग हियर, वी हैव प्रेजेंस ऑफ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो अंडर दिस कंडीशन यहाँ पे एक वेरिएशन क्यों आ रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस द पोजिशन इज सन इज नियर द इक्वेटर, the position of sun then rises towards the tropic of cancer during the summer season, and the position of sun it comes back and it goes to the southern hemisphere during the winter season. Okay, so because of the apparent movement of sun in this case, what we see here that कि जो ITCZ है, ITCZ है during the equinoxes, during the summer season and during the winter season, it also changes with respect to the motion of the sun or apparent movement of the sun. So in this case हम क्या देखेंगे कि during summer season temperature here it is almost around 40 डिग्री सेल्सियस, मैं एक दिन का टेम्परेचर काउंट कर रहा हूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर ही विंटर सीजन में here we will see that कि temperature here is almost around 30 degree Celsius during the daytime. So there is a variation of temperature during the in the same region. उसी region में temperature का variation हुआ है during the summer season and during the winter season also, and this is happening because of the seasonality factor, which is also called as the temporal variation in this particular aspect. Okay, so what we see here that कि temporal variation is also important to understand. It becomes one of the secondary factor for the variation of temperature over the surface of earth. Now move करेंगे आगे. Now there are certain general characteristics of isotherms. मैं isotherms की बात करूंगा. What is an isotherm? What is an isotherm? Isotherm is a line. Isotherm, it is a line which is joining same temperature point. Okay, same temperature point over the different regions of earth. Over the different regions of earth. Now इसको अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस कभी कभी ज्यादा पूछ लेता है. ओके, ओवर द आइसोथर्म पार्ट. सो हियर वी विल मेक जस्ट अ स्मॉल मैप ऑफ वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट.
Okay, so for example, this is a world map. This is our equator. इंडिया थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसे. So this is our equator here. So under the equator, what we see that, for example, I want to see that कि यहाँ पे 30 डिग्रीज का जो आइसोथर्म है वो कहाँ पे होगा. So in this case, what I am saying that कि over the oceans temperature will be comparatively less because यहाँ पे जो oceans का temperature है ये बहुत धीरे धीरे rise करता है and बहुत धीरे धीरे fall off भी करता है. So over the seasons also slowly temperature will increase. Okay, summer का जो mid part आ जाएगा उसके बाद में temperature increase होके highest point पे पहुंचता है. एंड विंटर के टाइम में भी जब विंटर रीच हो जाती है, मिड विंटर आ जाता है, देन टेम्परेचर अपने पीक पॉइंट पे लाइक इट डिक्लाइंस टू द lowest part here. So here if I want to make a 30 degrees of part, so what I will see here, as I am coming towards this North America region, so here I have presence of cold current, so there will be drop. Again we have presence of here Rockies, so there will be again drop. एंड इसके बाद में गल्फ स्ट्रीम में क्या होगा, ओके सॉरी, ड्रॉप होगा टुवर्ड्स द अपर साइड. ओके, नाउ गल्फ स्ट्रीम में टेम्परेचर इज अगेन हाई, तो यहाँ पे टेम्परेचर अगेन यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा. हियर in this part of Africa we have presence of Canary cold current. Okay, I will just draw the currents also so that there is no confusion. Okay, we have here Rockies. Okay, in this region we have desert. Okay, so what we will see here that कि यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर यहाँ पहुंचा, so again there is a presence of a cold current which is a Canary current. Now in this case again the temperature will drop here, temperature drop okay, but as it reaches the region of Africa में जैसे पहुंचेगा, so here we will see that temperature will, the isotherm will go near the equator. Okay, equator के पास जाके फिर ये वापस से जाएगा oceans में towards the polar part. Then it will have similar kind of effect and this will move forward. So here we see that the isotherm, it is not equal, it is not parallel to the equator, but it is varying because of the various factors here. अलग अलग factors के कारण यहाँ पे variations हो रहा है. So this we call it as the isotherm, a line which is joining the different points of equal or same temperature over the surface of Earth. Same thing will again go for like 27 degrees Celsius. Okay, 27 degrees Celsius के लिए भी okay, it will have a similar kind of, like I can say here 22 degrees Celsius अगर है, so this will also have a similar kind of a condition. But when we come towards the southern hemisphere, here what we will see that after 60 degrees of latitude, for example this is 10 degrees Celsius of isotherm, so ये थोड़ा सा cool होगा and it will be like almost parallel. So what we can see here in the southern hemisphere only, we have isotherms which are almost parallel to the latitudes here. Okay, it is almost parallel to the latitudes. This also helps us to understand the isotherm. So isotherm का अगर एक general characteristic हम देखें, so number one, यहाँ पे जो इसका general flow होगा, it will be parallel. Okay, it will be parallel to the latitude. Second चीज हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जिन regions में insolation ज़्यादा receive हो रहा है, वहाँ पे it will be bending towards the equator, and जहाँ पे there is a low insolation is present, it will be bending towards the polar regions. Okay, this is applicable in the northern hemisphere, also towards the southern hemisphere. Then sudden bend at the ocean में sudden bend होगा. Okay, दो कारण से होगा यहाँ पे. If there is presence of warm ocean current, like in this case Alaska is there, or in this case Gulf Stream is there, and in the case of cold currents, it will be bending towards the polar regions. Okay, then कुछ जगह पे हम देखेंगे कि देयर इज नैरो स्पेसिंग ऑफ टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल इफ वी कम टू द दिस रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल ओशन, सो यहाँ क्या हो रहा है कि देयर इज रिवर्स आर कमिंग हियर. ओके, रिवर्स यहाँ पे फ्रेश वाटर फ्लो कर रही है जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा. तो उस केस में हम क्या देखेंगे, वी हैव 13, 14, 13, 16, 18, 20. ओके, सो देयर इज अ वेरी क्लोज स्पेसिंग ऑफ आइसोथर्म. Okay, 13 से लेके 14 से लेके we have up to 20, then we have here 27, and here we have 30 degrees of temperature. So this will be a very close spacing. कुछ जगह पे हम देखेंगे कि very close spacing होती है. ऐसे same close spacing हम कहाँ देखेंगे, it will be seen towards the polar region. So यहाँ पे we have 0 degree, यहाँ पे we have 10 degree, यहाँ पे we have like 12 or 15 degree, यहाँ पे we have 20 degree.
Okay, so this will again be a close spacing here, which will be seen towards the polar regions, and जहाँ पे fresh water influx काफी ज़्यादा हो रहा है in a particular region. Okay, so this is a general characteristic of a isotherm. Okay, general characteristic of isotherm. इसको हम note down कर लेते हैं, then we will move forward. Okay, so temperature is the measure of heat in a certain region, a measure of heat over the certain region, in a certain region over the atmosphere. कि atmosphere में उसका particular temperature क्या है उस region में. Okay, we can draw this diagram कि there is latitudinal and longitudinal. इसको हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, इसको आप छोड़ भी सकते हैं. Okay, then we'll be coming towards the factors affecting the distribution of temperature. Factors affecting the distribution of temperature. Okay, we can write these points here. We can draw the diagram and we can write this point here. This part we see that this is obliquity. Okay, अगर obliquity की बात है, so this distribution it is also explained by the Milankovitch cycle. Okay, Milankovitch cycle, this will be understanding in a very well part, जहाँ पे हम देखेंगे the factors of the like the radiation or the reinforcing factors of temperature. This Milankovitch cycle हम वहाँ देखेंगे, प्लस क्लाइमेट चेंज में भी हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे इन डिटेल. Okay, first point, insolation varies from latitude to latitude. Insolation varies from latitude to latitude. Number two, regions within the equator, that is from 40 degrees north to 40 degrees south, 40 degrees north to 40 degrees south, receives surplus heat or sunlight or insolation, receives surplus heat or sunlight or insolation. Thus, more heat is gained than lost. Thus, more heat is gained than lost. Now, point number 3, regions beyond 40 degrees of latitude, regions beyond 40 degrees of latitude, the insolation received, the insolation received declines due to the obliquity of Earth's surface. The heat received or insolation received declines due to the obliquity of Earth's surface. Thus, more heat is lost than gained. Thus, more heat is lost than gained. Hence, it is a energy deficit region. Hence, it is a energy deficit region. Now, after this, we have secondary factors. Okay, this will be B. This is secondary factor. Under the secondary factor, we'll be writing number 1, that is the difference between the land and sea, or difference between the sea and land, which we also call it as the continentality factor. Okay, we can draw this diagram. ये diagram draw करते फिर लिखते इसके बारे में.
Okay, it is louder now. Okay, so here the first factor will be writing under the first part, the continents, the continents or land, the continents or land are are getting heated quickly, are getting heated quickly because of the lower specific heat, because of the lower specific heat, while it also cools quickly, while it also cools quickly, and while it also cools quickly, and the seawater and the seawater heats up slowly, heats up slowly due to higher specific heat, due to higher specific heat. स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम टॉपिक के और डिटेल में जाएंगे. ओके, ड्यू टू हायर स्पेसिफिक हीट एंड ऑल्सो कूल्स अप स्लोली, and also cools up slowly, due to which a temperature variation develops, due to which a temperature variation develops between the sea and land, due to which the temperature variation develops between the sea and land, resulting in the variation of temperature, resulting in the variation of temperature, which is changing as per the coastal topography, which is changing as per the coastal topography towards the interior of the continent, towards the interior of the continent. Okay, then number 2 will be writing about the ocean currents. Number 2, ocean currents. Ocean consists of warm currents and cold currents. Okay, पहले डायग्राम आप बना लो. Draw this diagram first. Okay, guys, voice is okay now? Okay. Ocean currents. Ocean consists of warm and cold ocean currents. Ocean consists of warm and cold ocean currents, where the cold ocean currents cools the continent, or the cold currents cools the nearing continent, and the warm currents heats up the nearing continent, and the warm currents heats up the nearing continent, resulting in the variation of temperature, respectively, resulting in the variation of temperature respectively. Okay, move करेंगे आगे. Okay, point number 3 is altitude. Point number 3 is altitude. Okay, we can draw this diagram, these two diagrams. This is basically a mountain. It can also be a plateau. Under the plateau conditions also we see that there is decline of temperature. जहाँ पे plateau ज़्यादा होता है. For example, India में like छोटा नागपुर plateau में temperature like उसकी height लगभग 600 to 800 meters तक vary करती है. So thus temperature here it is almost 4 to 5 degrees Celsius low than the surrounding area. Surrounding area से लगभग 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है.
ओके, लिखेंगे इसमें द टेम्परेचर डिक्लाइंस, द टेम्परेचर डिक्लाइंस as we move towards greater height, as we move towards greater height, that is altitudinally, that is altitudinally, altitudinally at the rate of 6.5 degrees Celsius per 1000 meters, at the rate of 6.5 degrees Celsius per 1000 meters, also called as environmental lapse rate, also called as environmental lapse rate. Thus, the presence of this altitude or mountain over a region, thus the presence of this altitude or mountain over a region results in decline of temperature, results in decline or the variation of temperature over those regions, results in decline or variation of temperature over those regions. For example, Rockies in North America and Andes in South America. For example, Rockies in North America and Andes in South America, which can also be seen as a part of variation in isotherm, which can also be seen as a variation in isotherm. Okay, next point देखेंगे, that is temporal variation or seasons, temporal variations or seasons. Okay, we'll draw this diagram. This is ITCZ. ITCZ. This is ITCZ, that is intertropical convergence zone. Okay, ITCZ, that is intertropical convergence zone. Okay, लिखेंगे इसमें with the change in season, with the change in season, ITCZ, that is intertropical convergence zone or other pressure belts, ITCZ, that is intertropical convergence zone and other pressure belt, moves with the apparent movement of the sun, moves with the apparent movement of sun towards the Tropic of Cancer during summer, towards the Tropic of Cancer during summer, and towards the Tropic of Capricorn during the winter season, towards the Tropic of Capricorn during the winter season, and towards equator during the equinoxes, and towards the equator during the equinoxes, due to which there is a variation of temperature, due to which there is a variation of temperature between the summer and the winter season, between the summer and the winter season, which is called as a seasonality factor, which is called as a seasonality factor. Okay, now इसके बाद बढ़ेंगे, that is heading इसका लिखेंगे general characteristics of isotherms. We'll write here general characteristics of isotherms. General characteristics of isotherm. Okay, we'll draw this diagram first. ये diagram हम बना लेंगे.
We'll write its definition also. We'll write this definition also and we'll draw this diagram. Okay, point number 1. Isotherms flow parallelly to the equator or latitudes. Isotherms flow parallelly towards the equator with the equator or latitudes. Point number 2. Isotherms suddenly bend at the ocean and continent boundaries. Isotherms suddenly bend at the ocean and continent boundaries. At the ocean and continent boundaries where the cold current are present, it moves polarwards, it bends polarwards while near the warm ocean current, it bends towards the equator. It bends towards the equator, comma. This phenomena is observed in both the hemispheres, comma. This phenomena or bending is observed in both the hemispheres. Okay. In the next point, where there is sharp change in temperature gradient, where there is sharp change in temperature gradient, the isotherm spacing becomes narrow. The isotherm spacing becomes narrow as observed in Bay of Bengal Sea and the Arctic Ocean region. Okay, Bay of Bengal Sea and North Arctic Ocean region. Okay, next point में, under the next point, where the temperature gradient is very low, the isotherm spacing is very wide. Okay, so guys, we will have a question here. एक question आप लोग लिखोगे. Just try to write an answer. ओके इस आंसर को आप पोस्ट कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली भेज सकते हो, आप व्हाट्सएप जो नंबर्स दिए उस पर भी आप सेंड कर सकते हो. देन वी कैन हैव अ डिस्कशन और मेंटरशिप ओवर दिस आंसर. क्वेश्चन इज डिस्कस द फैक्टर्स affecting the distribution of temperature over the Earth's surface. Okay, discuss the factors affecting the distribution of temperature over the Earth's surface. Okay, in this part you need to just give that reference कि primary factor है, secondary factor है, उस तरीके से एक complete variation किस तरीके से हो रहा है, कुछ examples इसमें put करेंगे जो हमने अभी देखे and will write the answer. Okay, 150 words में से लिखना है, diagrams draw करना है and write this answer. So guys, we'll be stopping here for today and we'll be meeting in the next class. Okay, try to write the answer and answer share karo, we'll discuss over it. All the best guys and thank you very much.